अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। हुकूमत के 2 साल से ज़ायद अरसे तक वॉच लिस्ट पर रखे गए 2 तंजीमें जमात दावा और फलाह इंसानियत को कलादम तंजीम करार दे दिया है। इब्तदाई कार्रवाई में भावलपुर मदरसा को सूबाई तहवील में लेकर महकमा औकाफ के हवाले कर दिया गया है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुआ है और मस्जिद सुबहान अल्लाह का कंट्रोल पंजाब हुकूमत ने संभाल लिया है और नफरी पुलिस की भारी भी तैनात की गई है। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। कुछ अरसा कबल इन तंजीमों को मेन स्ट्रीम करने और स्ट्रीमलाइन करने और सियासी धारे में शामिल करने की कोशिश की गई थी, मगर वो कोशिश नाकाम हुई। अब कलादम तंजीमों को कलादम करार भी दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द वो दूसरे नामों से मंजर आम पर आ गईं। अब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि तंजीमों से वाबस्ता अफराद के बैंक अकाउंट्स और उनके नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिए जाएं। माजी में इन तंजीमों को मिलने वाली मुआवनत ना रोकने और कार्रवाई ना करने पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया था। अब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की तरफ से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि वो मज़कूरा तंजीमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और कुछ तज्ज़ियाकारों की राय ये है कि अगर हुकूमत इन दोनों तंजीमों के खिलाफ अब भी कार्रवाई ना करती तो उस बात का इम्कान था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देती। अब एक ऐसे वक्त में जब भारत पर जंगी जुनून सवार है और हुकूमत की तरफ से मुस्बत इकदाम है, मगर ये इकदाम कितना देरपा होगा और कितने इसके फार रीचिंग नताइज होंगे। कलादम करार दी जाने वाली इन 2 तंजीमों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई किया मुमकिन है कि नहीं, उस पर बात करेंगे और इन तंजीमों की तारीख पर भी करेंगे। जनाब बाकिर साहब, इससे पहले कि हम आए कि जी रियासत पाकिस्तान के ये इकदामात कितने मुस्बत थे, क्योंकि हम उसी रियासत को बहुत बार तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि जी इन कलादम तंजीमों के साथ आपकी क्या पॉलिसी है, लेकिन फैटफ को एक तरफ रख के जो अभी पुलवामा के बाद ये सारा बैकलैश हो रहा है, क्या हमें रावलपिंडी पे फोकस करना चाहिए या श्रीनगर में जो आपकी एक फार राइट हिंदुत्वा हुकूमत है जिसकी वजह से आज इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कश्मीर में इट्स एट इट्स लोएस्ट एवर, जहां आपने इतने लोगों को बेदर्दी से मारा, हमने पैलेट्स की भी बात की, हमने बैनुल-अक़वामी अटेंशन की बात की कि आलमी सतह पर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है वो कभी इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल या इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं हो पाई। तो अब जो हिंदुस्तान का ये मीडिया और जो उनके कुछ अब उनको जो इंटरनेशनल भी सपोर्ट मिलता है, जो बार बार कह रहा है कि जी पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की इन कलादम तंजीमों को पनाह देना ये मसला है, क्या थोड़ा सा इनको इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहिए कि कश्मीर जहां ये 19 साल का लड़का आदिल डार एक डोमेस्टिक इंसर्जेंट वहां का पला बड़ा हुआ वो इस तरह की कार्रवाई जब करता है तो इंडियन पॉलिसी कसूरवार है? यकीनन आपने बिल्कुल उसका ठीक डायग्नोसिस किया कि जो हम इस वक्त वहाँ पर एक सूरत हाल देख रहे हैं कश्मीर में, वो पिछली जो इंसर्जेंसी 90s में हुई थी उससे बहुत मुख्तलिफ है। जहाँ वहाँ पर अब जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो इंडिजिनस हैं और जो जिस तरह का उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई और उनमें गम करने के बाद जो गम गुस्सा है वो बढ़ रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि पुलवामा के बाद कश्मीरी जो भारत के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम थे उनके ख़िलाफ़ किस तरह से किया गया, क्या उसका बैकलैश नहीं आएगा, ये चीज़ भारत के सोचने के लिए है। भारत को देखना है कि वो अब कश्मीर उसके हाथ से निकलता जा रहा है, वो यकीनन इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस ढूंढेगा। लेकिन जब वो डिस्ट्रैक्शंस इस तरह की ढूंढ रहा है तो वहाँ पर हमें ये देखना है कि कोई हमारी ऐसी कमज़ोरी उसको वो फ़ायदा ना दे कि किसी तरह से वो अपना जो उसकी खामियां हैं या वो जो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी या ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है वो हमारे ऊपर मुद्दा डाल दे, क्योंकि हमारी यहाँ भी कमज़ोरी है। अब जबकि ये देखें अभी इसका मैं आपको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ ले चलूँ कि वहाँ पर आपने एक तरफ तो बिल्कुल बड़ा अच्छा फैसला किया कि फ़ौज को ऑथराइज़ किया। आपने देखा जनरल बाजवा कल फ्रंट लाइन्स पर गए और तैयारियों का जायजा भी लिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा। लेकिन साथ साथ जो चीज़ वो दूसरी थी कि जी हम अपनी जो
एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक इस लिहाज से था कि रद्दुल फसाद को शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं, उससे पहले ज़रबे आज़म हुआ, तो आज भी आप ये कह रहे हैं जी उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर रहे हैं। हमें तो चाहिए था कि हम बहुत पहले इनके खिलाफ कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचा देते। अब भी हमने आपने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद आपने जब प्रोस्क्राइब किया जमात दावा को, आपने आपकी दफ़ा नहीं किया, दूसरी दफ़ा आपने किया। जनवरी में भी आपने 2017 में भी उनको प्रोस्क्राइब किया था, आपकी दफ़ा से फिर आपने किया। तो आपने एक तरह से एक्सेप्ट किया, क्योंकि आप जिस लॉ के तहत उनको कर रहे हैं, ATA जो एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का, उसकी 11B के तहत आप कर रहे हैं, और उसके पहली है कि जी उस तंजीम को या उस शख्स को 11EE के तहत इस वॉच लिस्ट पे, सॉरी ब्लैक लिस्ट पे डाला जाएगा जो दहशतगर्दी के साथ उसका कोई ताल्लुक है। तो आपने सेटिस्फाई होके डाला ना, सेटिस्फाई होके डाला। लेकिन अगर हम कुछ वक्त में, क्योंकि हमने वक्फा भी लेना है, ये जो तमाम आपकी कलादम तंजीमों की पॉलिसी है ये फेल हो चुकी है। 2002 में, बल्कि उससे पहले 1999 में जब परवेज मुशर्रफ ने कोशिश की थी, और उसमें इन्हीं जमातों के कुछ ऑफ शूट ग्रुप्स थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ पे भी हमला किया था, तो हमें यही बताया गया था कि हम किसी तंजीम के बीच तफरीक नहीं करेंगे। APS पेशावर का सानिया हुआ जनवरी 2015 में, मुश्तरका इजलास के जरिए आपने अपने ऊपर अस्करी अदालतें भी नाफिज कर दी और ये कहा कि जी अब तफरीक नहीं हो पाएगी। मुझे जो समझ नहीं आती जनाब बाकर साहब कि अब हम 2019 में बार बार ये कार्रवाइयाँ होती हैं, बार बार पाकिस्तान कितनी बार इन्हीं हमलों का शिकार हुआ। ये हम एक सोच से लड़ रहे हैं, और ये कहना कि जी कानून साजी के जरिए हम इन लोगों को फोर्स कैजुअल पर डाल देंगे, वो मुझे एक्चुअली बात समझ नहीं आती। क्योंकि आप उन्हीं ग्रुप्स का जिनका हमने आज नाम लिया कि जी ये फला XYZ है, लश्कर XYZ है, तंजीम XYZ है, इन सब की जो तंजीम है, मैं और आप जानते हैं 90 की दहाई में इनके क्या नाम थे, 2000s में इनके क्या नाम थे, ये किस तरह इंतखाबात से पहले मेन स्ट्रीम होते थे ताकि कुछ हुकूमतों को, और उनमें परवेज मुशर्रफ भी शामिल हैं, उनकी हुकूमत को अक्सरियत मिल जाती। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो जमात थी, जो उनके छोटे भाई थे, उन्होंने क्या कुछ किया था, क्या उन्होंने किसके साथ इलेक्टोरल इत्तेहाद बनाए थे फ़िरका वराना तंजीमों के साथ। ये एक मेंटालिटी है, आपके सिविलियंस में है, अस्करी कुव्वतों में है। अब आप इस सोच से किस तरह मुकाबला करेंगे, और ये जो फोर्स स्केड्यूल पे लोगों को डालना उतारना, इससे हम आगे किस तरह बढ़ेंगे? मैं उससे आपने हिस्ट्री का बयान किया, अभी में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब स्टेटमेंट आया उसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि हम एक्सट्रीमिस्ट के हॉस्टेज नहीं रह सकते, हमें अब इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करना है। ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन इस पर अमल करना मुश्किल है। अभी हमारा टेस्ट है कि क्या ये, जैसे हमने कहा ना, ये दूसरी दफ़ा इन तंजीमों पे, जमात दावा पे, फलाह इंसानियत पे 1 साल में दूसरी दफ़ा ये पाबंदी लग रही है। अब मैंने जो आपका जो लीगल पॉइंट आपके साथ मैं कर रहा था कि आपने इनको इस लॉ के तहत जब आप प्रोस्क्राइब कर रहे हैं तो आप कन्विंस होकर कर रहे हैं ना कि दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। मुझे बताएं कि आपने इसके बाद क्या फॉलो अप एक्शन लिया। अब मुझे, या मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप कहते हैं कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है, अगर आप उसको सिर्फ वो हिफाजती तहवील का नाम दे के उसको जेल में उसके लीडर को डालते हैं और उस पर मुकदमा नहीं कायम करते उस दहशतगर्दी का, तो फिर आपके अपना जो केस है वो कमजोर हो जाता है, और उल्टा वो शख्स अदालत में जाके आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की उसको चैलेंज करता है, और फिर ये सारा चीज उस तरह से डिसिपेट हो जाती है। यहां पर अब पाकिस्तान को चाहिए कि इसको फॉलो अप करे। आपने इन पे टेररिज्म का एलिगेशन लगाया है, इनके साथ आप पूरा अब परसू करें और अपने जो आपके पास सबूत हैं वो करें, वरना यही लगेगा कि आपने बैन अल-अक़वामी प्रेशर में आकर ये सब कुछ किया ताकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्क्रूटनी से बचाया जाए। अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जिसकी जो मीटिंग अभी पेरिस में हुई, तो उसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है कि पाकिस्तान की रियासत को जो 7 तंजीमें हैं, जमात दावा है, लश्कर तैयबा है, फलाह इंसानियत है, जैश मोहम्मद है, अलकायदा है, हक्कानी नेटवर्क है, इनके मालियात का अपने मालियाती निज़ाम पर जो उनका असर है, उसके नुकसानात का असर जो है उसका इदराक नहीं है। ये चीज़ मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जल्द रियलाइज कर लेनी चाहिए। अभी हम मेरे ख्याल में उस सोच से आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि जो असद उमर साहब का जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उसका इन मीटिंग के बाद जो रिएक्शन आया, तो उन्होंने कहा कि जी बड़ी कोशिश थी हमें ब्लैक लिस्ट पे डालने के लिए, हम खुश हैं कि ग्रे लिस्ट में रहे। लेकिन अगर हम इस ग्रे लिस्ट की भी थोड़ी सी
بات کر لیں اور ہم نے کہا کہ جی پاکستان یہ بالکل غلط کر رہا ہے اور یہ جو بینڈ گروپس ہیں ہم نے اس کو ابھی ان ڈیٹیل ڈسکس کیا، لیکن مجھے یہ بتائیں جناب کہ یہ جو لسٹ ہے اس کی اپنی کتنی انٹیگریٹی ہے؟ ان لوگوں جو فیٹف ہے، یہ جو باڈی ہے، ان میں روس بھی شامل ہے، ان میں سعودی عرب بھی شامل ہے، ان میں بہت ایسے ممالک شامل ہیں جن پہ ہر طرح کے الزامات لگائے گئے، مالی معاونت کے بھی الزامات لگائے گئے، ہر طرح کی ریگنگ کے بھی الزامات لگائے گئے، بیک چینلز استعمال کرنا اور اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنا جو فیٹف کا ایک کور نقطہ ہے، ان تمام ممالک نے کیے۔ صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے دائیں بازو کے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ بہت ہمیں ایسا لگ رہا ہے، ایک بہت پولیٹیسائزڈ قسم کی گرے لسٹ ہے، اس میں تھوڑا بہت آپ کو سچ نہیں نظر آتا؟ اصل اس میں یقیناً تھوڑا بہت نہیں، کافی حد تک سچ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے، یہ انٹرنیشنل یہ جو آپ کا آرڈر ہے یہ پالیٹکس پہ ہی چل رہا ہے، کسی طرح سے کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے جو ویٹ کے حساب سے، آپ نے جتنے ممالک کا نام لیا، سعودی عربیہ کا، رشیا کا، ان کا ایک ویٹ ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرتے ہیں، اور آپ کا ویٹ نہیں ہے، ہمارا ویٹ نہیں ہے۔ ہم نے اپنا جو نیریٹو ہے اس کو کافی حد تک کمزور کر دیا ہے، ہم نے پیچھے کچھ غلط چوائسز کی جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تو بہت بڑے تیس مار خان سمجھتے ہیں، لیکن دنیا ہمیں اس طرح سے نہیں دیکھتی۔ امید ہے جناب یہ ایک نیا آپ کو موقع ملا ہے، امٹیتھ بلکہ آپ کا فراہم کیا گیا ہے، اس کو اگر آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس بار کچھ ایسے تعمیری اقدامات لیں جو آپ نے ماضی میں نہیں لیے کلادم تنظیموں کے متعلق۔ اگلے حصے میں کچھ ڈومیسٹک سیاست کی بات ہوگی اور ریونیو وزیر حماد اظہر صاحب نے جو ایک ٹیکس ڈائریکٹری کے ذریعے ہمیں اپنے منتخب نمائندوں کی ٹیکس ادائیگی کی بات بتائی ہمیں اور ان کے ڈیٹیلز فراہم کیے، رہیے گا ہمارے ساتھ، اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے مالی سال میں اراکین اسمبلی اور سینٹ کی جانب سے جمع کرائے گئے انکم ٹیکس کی تفصیلات جاری کر دی ہے، جس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھی ڈیٹیلز فراہم کیے گئے ہیں۔ جناب باقر صاحب، کیونکہ وقت ہمارا تھوڑا سا کم ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ سالوں سے، کیونکہ ایک تو میڈیا کا بھی کردار تھا اور ریاست کو بھی یہ بات سمجھ آئی کہ اگر آپ ریونیو نہیں جنریٹ کریں گے ٹیکس کے ذریعے، کیونکہ آپ فخر تو نہیں محسوس ہونا چاہیے لیکن آپ ان ممالک میں شامل ہیں جو سب سے کم ٹیکس ادائیگی کا جو اعزاز ہے وہ رکھتا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا کچھ ڈسٹنس ٹریول نہیں کر پائے کہ جی یہ چیز کرنی ہمیں چاہیے؟ پہلے تو یہ ترجیح بھی نہیں رکھتی تھی۔ اسد پہلے سے پہلے کہ اس ٹاپک پہ آئیں، میں تھوڑا سا آج آپ سے جسے کہتے ہیں نا اختلاف سے اتفاق تک آتے ہیں، بتائیں۔ تو وہ یہ کہ یار آپ کو آج ٹاپک یہی ملا تھا، اسد دورانی کا آپ کو پتا ہے پینشن بند ہو گئی، آپ نے نہ وہ ڈسکس کی، اچھا، نہ آپ نے وہ دو فوجی افسران جن پہ اسپیونیج کا کیس بنا ہے وہ ڈسکس کیا، اور بیچارے چلے آپ پولیٹیشینز کو ٹیکس شیم کرنے کے لیے چل پڑے کہ وہ دیتے ہیں کہ نہیں ٹیکس دیتے، آپ وہ ڈسکس کر لیں۔ نہیں بہرحال آپ نے یہ چھیڑ دیا تو اسی کی بات کر لیتے ہیں۔ بتائیں کہ یہ جو آپ کے یہ 5ویں دفعہ ڈائریکٹری آئی ہے، بتائیں اس میں ابھی تک اصل مقصد نہیں، آپ نے بیچ میں نہیں، آپ نے اسد دورانی باقی دو افسران کی بات کی، آپ واپس ٹیکس پہ کیوں جا رہے ہیں؟ بتائیں۔ اسد دورانی صاحب کا، اسد دورانی صاحب کی پینشن ریووک کی کیونکہ انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی، ان کو تو شاید اصغر خان میں ان کی پینشن کو ریووک کرنا چاہیے تھا، آپ کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کریں سر۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ نہیں، یہ بیچ میں یہ بیٹ اینڈ سوئچ کیا کیا آپ نے کہ آپ یہ بات کریں آپ بات، پھر جی بتائیں کیا رائے رکھتے ہیں؟ باقر سجاد صاحب اپنی رائے کا اظہار کریں گے اسد دورانی کے متعلق اور ان دو افسران کے متعلق۔ سر the floor is yours، بتائیں۔ نہیں، اسد دورانی، اور میں نے تو صرف یہ پوائنٹ تھا میرا کہ آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ پولیٹیشینز کو برا بھلا کہنے کا ایک فیشن ہے، آپ فوجیوں کو برا بھلا کہیں نا، یہ کیمرہ چل رہا ہے، بتائیں بتائیں نا سر، آپ نے انٹرو دیا، اب آگے بڑھیں۔ اسد دورانی صاحب کو اصغر خان میں ذمہ دار کرنا چاہیے تھا یا اس میں کرنا چاہیے تھا؟ اسد دورانی صاحب کا جہاں تک کیس ہے اور ان کو یہ کہا گیا کہ جو ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کی انہوں نے وائلیشن کی ہے، اور اس پہ جو مطلب ایک تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پروسیس جو تھا اس کو نقطے پہ آئے سر، نقطے پہ آ رہا ہوں کہ اوپن ہونا چاہیے تھا، اور لیکن یہ جو بالکل جیسے کہ نامینل سی ایک چیز ہے کہ اگر آپ کا وہ اس کے پینشن ریووک کر دی،
وہ آپ نے کر دیا. لیکن سیم سٹینڈرڈ جو ہے آپ سویلینز پر بھی کے لیے جب بھی سویلینز کے بارے میں آپ کو کوئی اعتراض ہوتا ہے تو وہاں نہیں اپلائی کرتے, جو میرا سمپل پوائنٹ ہے کہ وہاں پر جب سویلینز کے اوپر سویلین نے را کے چیف کے ساتھ کتاب لکھی ہے. را کے چیف کی بات نہیں ہے. اچھا, جہاں پر بھی آپ کو ان کے سویلینز کے کریڈنشلز کے اوپر آپ نے انگلی اٹھائی, لیکن آپ ان کے اوپر زیادہ سخت ہوتے ہیں, ان کے اوپر زیادہ آپ ایک سخت گیر رویہ رکھتے ہیں, جبکہ ادھر یہاں پر ایک اس کا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروسیس کا اس نے وائلیٹ کیا, آئی ایس آئی کا چیف رہا, اس نے طرح طرح کی باتیں بھی اس میں کی جو میرا خیال میں ہماری قومی سلامتی کے لیے اتنی جتنا کہتے ہیں کہ اچھی نہیں تھیں جو پاکستان کے نیریٹو کے لیے. لیکن اس کے اوپر جا کر آپ نے صرف وہاں پر پینشن تک کی بات کی اور پھر کہا کہ ہم یہ بھی ریویو کریں گے کہ ای سی ایل کا ہو کہ نہیں. اور بھی چیز ہے دوسرا طرف جب کبھی سیاستدان ہو تو پوری ایک کیمپین اس کو ملائن کرنے کے لیے آپ ایک اور بھی چیز ہے جناب, وہ یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد جب آپ نے اسلم بیگ اور اسد درانی کو قصوروار ٹھہرایا ہے تو ان کا جو جرم ہے وہ شاید یہ صرف نہیں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی, ان کا جرم یہ ہے کہ 1990 کا جو انتخاب ہے وہ انہوں نے بالکل ڈائیورٹ کر کے میاں صاحب کو جتا کے آپ کی جمہور کو سبورٹ کر کے اس کو ٹھکرا دیا. کئی بار ڈسکس کیا, خیر یہ سیگمنٹ ہم نے ٹیکس پہ ڈسکس کرنا تھا, لیکن جیسے آپ نے دیکھا باقر صاحب کی ایک سیوک ڈیوٹی تھی یہ بتانے کہ بیلنس جو ہے, جو ترازو ہے ہمارا سیو میں اور ملٹری میں وہ برابر نہیں ہے. اگلے حصے میں آپ سنیں گے انہی باقر صاحب کو جو ہمارے اتنے تجربہ کار تجزیہ کار ہیں ایرانی سفیر کے ساتھ گفتگو میں, اور ایرانی سفیر نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, تعلقات ہمارے ایران کے ساتھ کشیدہ تھے, انہوں نے بات کی ود اے ویو ٹوورڈز پیس اینڈ فرینڈشپ. رہیے گا ہمارے ساتھ. ناظرین, آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گردی کے واقعے کی وجہ سے پاکستان ایران تعلقات میں ہم نے دیکھا کہ کچھ دباؤ آ گیا, جس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ہم منصب جواد ظریف سے بات کر کے گلے شکوے دور کرنے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایران کے سفیر جناب مہدی ہنردوست صاحب. السلام علیکم. تھینک یو فار اسپیئرنگ ٹائم ٹو ٹاک ٹو اس. Mr. Ambassador, when Mr. Qureshi spoke to Mr. Zarif, he offered cooperation in investigation, and Pakistan sought proofs from Iran about the presence of terrorist sanctuaries or terrorist groups on Pakistani soil. Has Iran provided them? And we also heard that a Pakistani was probably involved in it. Can you confirm that report as well? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum jami'an to you and all of the Pakistani people. Something that is more important than the others is that the Iran and Pakistan, they are two neighboring countries with full of the commonalities, and also it is very important for the both sides that should keep open their eyes to the borders, because it is the lying borders, and maybe if you ignore any point of this border, maybe some accident comes to this area that is not benefit to the two countries. And unfortunately nowadays, recently we had very bad accident in Iranian territories, and when the Iranian looks to the border of the Iran and Pakistan as a border of the peace and brotherhood and love, and so it is so difficult for the Iranian side that they received some accidents like that in their region, especially in our eastern part of our country, close to Pakistan. The two ministers, they talked about more attention to the relation, and also they should closely look after all of the issues, all of the matters in the area, and we never, the both sides should try in the better interaction. They should never give any chance to any terrorist groups that would like to spoil the
brotherly relation between the countries. And Alhamdulillah, there were a lot of achievements between the militaries of the two countries and also some other relevant departments and dignitaries that they should try to improvement the border cooperation. And as you know, my brother, something that the both sides exposed to this heinous issue that is despicable of terror. That in recent years we suffered a lot of pain regarding to the activities of the illegal groups and terrorist groups. And it is natural that the Iranian side looking to the better interaction with our brothers in Pakistan for overcoming to this phenomenon. So no, but I was talking about the proofs that Pakistan was asking. Has the Iranian side provided Pakistan with some sort of evidence so that they can continue their investigation on it? The both sides agreed. The both sides agreed for more investigation regarding to the activities of all of the groups, especially that bastard group that they attacked to Iranian territory and martyred a few of our soldiers. It is something that was under the negotiation between two ministers that we should be in traction for reach to results of the overcoming to this issue. As you know, my brother, for many years the area is ready for activities of the illegal groups. Some part of that is come back to the geographical situation of Iran and Pakistan. The both countries, they are in the transit line of the drugs, and also so it is some part of the importance of our borders. And the Iranian side with the fully cooperation with Pakistani, and the both side in the talking agreed for flare up for strengthening the cooperation over this matter, because the terrorist groups, they are in the region. They are affiliated. They are affiliated with the third parts. And because unfortunately, some countries that they are not convinced about any cooperation between Iran and Pakistan, and it is something that we should keep our eyes open on it. And there were also news reports, I'm now referring to the news reports that were published in different newspapers, that a Pakistani was involved in the attack on, on the bus in Zahedan. So have you also received some reports from your official channels? No, but something that is important and you should look at it is that, it is something that happened. Some terrorists that they attacked to our territory, they attacked to our soldiers, they killed many of our soldiers. But something that we are 100% we are sure that any accident like this is not benefit to Pakistan, is not benefit to Iran. And so we should look more to the importance of this issue, and we try to stop it again. My brother, Iran looks to border of the Pakistan as a peace and friendship, and so Pakistanians, according to their capabilities, they served a lot of their potential to some other areas, and so this matter gave the vacant seat for the activities of the terrorist groups. But after these recent interactions between Foreign Minister Qureshi and Jawad Zarif, and there was also interaction between the militaries, probably General Bakeri also called the military side here. So does Iran now feel reassured that Pakistan would attend to its concerns? Something that we are sure, and it is something between the two ministers talking, the both sides emphasized that once again they put the hand to each others, and also they are agreed. They agreed regarding to the more cooperation and be in touch, because it is very important case, and it is possible that every time will be happen. And so
something that 100% we are sure, and we have fully confidence to our brothers in Pakistan in some relevant department and all of the sections that they are engaged to the securities in our borders. We believe that the Pakistanian very soon, inshallah, with the Iranian support, with the Iranian interaction under the cooperation, inshallah, will be fruitful, and we received Allah, and inshallah we will be witness for the achievements in this regard. You know, there was a little bit of concern in Pakistan about the reaction, the sort of reaction that came from Iran, particularly few statements, angry statements were made. I understand that, you know, it was sort of emotional reaction. But do you think that with the passage of time that, you know, better relationship, better cooperation would prevail between the two countries? It is evident to all that my brothers that nobody can ignore the importance of the relation, and never two sides never accept any risk on it. And so I believe the horizon of the cooperation between the countries is more and more clear, and because they know very well that we are in the same page, we are in the same boat, and any ignorance, any ignorance and any that they don't be active regarding this matter, and if we waste the time, the both countries received a lot of consequences of the despicable of the terror in the region, that for many years we suffered a lot of pain to this matter. And inshallah the horizon is so clear and so shining. I read one of your interviews in a newspaper in which you said that Iran welcomes Saudi investment in Pakistan because Pakistan will benefit from it. But we heard some, a statement from the Saudi foreign minister. Are you having any second thoughts after that statement about the cooperation between Pakistan and Saudi Arabia? My brother, one of the most important problems that nowadays we suffered a lot of pain in the globe of Islam, and unfortunately among the regional countries, is the widening gap among us. And it is not the first time that we said we have no objection to any interaction among the Muslim countries, because we know that we exposed to one written scenario. You can look to the last 2 decades. What was happened for many countries in Islamic families? What happened? And be sure about it, that if the big Muslim countries, they don't come together with a smiling face and fully hearts of cooperation and interaction, be sure about it that we give the platform for some powers that they do any mischief among us. And so, regarding to this looking of the Iranian side, that we believe that the convergence in the region is the only way for overcoming to any issues and any gap. Convergence is the golden principle of the Iranian policy. We believe under the convergence and the interaction among the countries in the region, we can come to better stance, we can come to the better position, and so we had never any objection and consideration for interaction among the Muslim countries. But it is something that we, when we said, we never expected that one of the Muslim countries in the region, it means Saudis, that they misuse Pakistan as some part of our heart. Pakistan is not only our neighboring country. Pakistan is some part of our hearts. You can never find
in the region, or maybe in the world. Two countries as Iran and Pakistan, with full of commonalities, without any conflict, without any difference, a lot of good opinion and good looking for the interaction with the Muslim countries. We never agreed, we never satisfied, we never convinced any widening gap between us and some countries in the region. And we never expected that the Saudis, exactly in the hand of the written scenario and in the hand of our common enemies, they do everything that they can. Nowadays we are in a worsening time among the Muslim countries that you haven't like this in the past. And the burden of the matters and the responsibility is on the shoulders of the big countries. How many important Islamic countries remain? It is something that we should try to draw the attention to all of the countries, especially the big ones and regional countries as Iran, Pakistan, and some Arab states, that they set aside some differences and they come together, that never and never we can keep the fire in our neighbor's home. Unfortunately, the terrorism right now changed the face from the one country to the regional country areas, and also to the bigger one. It became as a global phenomenon. And this despicable terror needs to the collective support, and it needs to the global solution and regional also. Ambassador, thank you very much for sparing time to talk to Dawn News. Thank you very much. My brother, thank you so much.